Yeah, I can see now. So how are Sir, you? sir, I'm great. Good. So Mr. Mohit, your surname is Mohit. Surname is Agrawal and NADBAIWALLA. Yes, sir. Nadwai is the name of your post office. Yes, sir. It is my hometown, sir. It is your hometown and okay, hometown. You have changed your name. So what is Sir, your changed name now? sir, it is Mohit Agrawal Nadwaiwala. Earlier, it was Mohit Agrawal. Oh, earlier it was only Mohit Agrawal. Now it is Mohit Agrawal Nadbaiwalla. So just Sir, tell which place do you belong to? yes, sir. Okay, good. So you are from the district of Bharatpur. What for the tourists go to Bharatpur? Sir, primarily it is Kevladev National Park, the World Sanctuary. And secondly, sir, there are other tourist attractions also, like Are those other Sir, am tour? I audible? Sir, Yeah, am I yeah, very audible? much audible. So other tourist attractions are one Cape Uh, National Park you have mentioned. Yes, sir. Apart from that, the religious sites also, like for example, Srinathji Mandir in Puchri, the Govardhan in Govardhan, Bandbaretha in Bayana, the fort itself of Bharatpur. Uh, Apart from that, the museum in Bharatpur, sir. So there are many tourist attractions apart from the Keladem National Park also, sir. So, do the migratory birds visit Kevladev National Park? Certainly, sir. From which country? From which Sir, place? yes, sir. Sir, mainly Central Asia and European countries bird fly because Bharatpur exists on the Central Asian flyway, and it is a transitory place where they rest. The birds, for example, bar-headed goose. Earlier, the Siberian crane used to come, but since 2002, we did not see the Siberian crane in the Bharatpur National. Since which year? 2002, 2002, To 2002. yes, sir. Okay. Uh, Apart from that, there are many other birds also. More than 300 species of birds are um, can be seen there. Okay. So, what about the GDP growth of our country in this particular year, in the first quarter and second quarter? GDP growth. So it was around 7.8 in the first quarter and more than 8.2 to be exact in quarter two. M- More Good. than the estimates. More than the estimates. Okay, more than the estimates. Okay. So now you have already joined Indian Economic Service, or you are like about to join? Sir, I am about to join. The joining is not come yet. Okay. So India is the fourth largest economy at present, or what? Uh, Certainly, sir. It is the fourth largest one, and we are about to become the third largest. Okay, so we are about to come third largest. By which year do we expect to be the third largest economy of the world? Sir, around 2027, 28, I believe that we will going to reach there. Okay, somewhere around 28 to 2030. Anyway, so by that year, we expect to be the third largest economy of the world. Now, Sir, with the present rate, would we be able to achieve that particular target of being the third largest economy of the world by the year 28 to 2030? 8.2 sorry, in the second quarter, we have mentioned, and it was 7.8 in the first quarter. So even if it goes with this particular growth rate, then would we be able to be the third largest economy of the world by that particular year? sir, I believe there are many factors apart from our growth. Also, the growth of other No, countries first of all, mentioned. I'm not talking about the factors. I'm talking about the growth rate only. My question is whether with this particular growth rate, साल का तो अच्छा है 8.27 सेकंड क्वार्टर का बहुत अच्छा है इससे पहले 7.8 था माय क्वेश्चन इज स्पेसिफिक आई एम नॉट talking about the factors. I will come to that later on.
I am asking whether with this particular growth rate, would we be able to be the third largest economy of the world by the year 28 to 2030? Sir, I'm not sure Okay, exactly. no problem. So now you tell me that which are the factors which will contribute towards the being third largest economy? Which are the main challenges, factors responsible for that? So primarily our growth, it should be around this more than 7.5% continuously. Secondly, the world should also relative to the world. Now we are Should be talking same. about the factors. Yes, sir. Yeah. So one, okay. What else? Yeah, go ahead. Uh, Apart from that, the overall sir, global GDP, global economic growth also that matters in our because it contributes directly or indirectly to our growth. Uh, Third, sir, the global scenario, which is actually emerging after the supply chain disruptions, the Trump tariff effect, and everything. So, if it is stabilized, it would be better for India to achieve that goal much earlier than expected, sir. Okay. Which is the largest tax reform carried out in our country so far? Sir, with respect to indirect tax, I believe it is the largest reform, the GST, which has been brought from 1 July 2017, sir. Uh, since Through independence, it is the amendment, sir. It was the 101st Constitutional Amendment Act, sir. 101st Amendment in the Constitution. So under So, this particular constitutional amendment, amendments were made in how many articles of the Constitution? And can you name some? sir, I can't exactly remember the number of articles that have been Anyway, number amended. was five. So can you tell me some of them? Yes, sir. So, Article 279 is GST Council. It has been introduced. Article Very right. 246, yes, sir. Mhm. Article 246 also in that the IGST has been introduced, sir. Okay. Any other? Sir, I'm not remembering as of now. Okay, no problem. So should we have already done this one nation, one tax for So, indirect taxes? so Should we have one nation, one election also? Should we go for that? sir, it should be based on the political consensus, the political parties present. If they are ready, if the nation is ready, then it would be a wise choice for So a this country should like be ours. first and foremost factor, or merits and demerits, keeping it should be based on keeping the merits and demerits into consideration. Sir, I believe the political discourse will factor in the merits and demerits. And with respect to one nation, one election, I believe that uh, watertight doing the one nation, one election, we can do in two phases. That would be a very practical approaches. Uh, one at one time the assembly election could take place, and at one time the national election could take place. That would be a wise approach, rather. Okay, what is the controversy related with SIR? What is SIR? Sir, it is a systematic, intensive revision with respect to the electoral roll to revise, to purify the sanctity of the electoral rolls uh, and verify each and every voter so that the eligible person is able to vote and the ineligible person are out of the electoral rolls. Okay, have you ever heard about PM Care funds? Yes, sir. So in that there is the Swift code is also written. Swift code, account number, and then Swift code. This one. So what is the Swift? SWIFT. Sir, it is an international messaging system of financial transaction with respect to the financial transactions. So can you? Is it an acronym? Sorry, sir, I'm not exactly aware Yes, about it it. is an acronym. So, Now, can you remember what it stands for? I'm sorry, sir.
Okay, no problem. From Rajasthan, there is a person who is very well known, Rajendra Singh, Mr. Rajendra Singh. What for he is known? Sir, he was an Olympic medalist, Eh? and now he's the Olympic Rajendra medalist. Singh, Rajendra Oh, Singh, okay, okay. Oh, I'm sorry, sir. Rajan Singh, sir, he's the waterman of Rajasthan, mainly. waterman In of the Rajasthan. waterman of What exactly yes. has he done? Yeah, you are right. Sir, near the Aravali Hills in Alwar district of Rajasthan, a river called Aravali flows through it, and he revived that particular river. That um, overall improved the overall environmental condition of that particular area, and the water availability also increased, sir. Okay, any recognition given to him for his work? Award? Sir, I'm not exactly aware. Okay, no problem. Oh, you have done marine engineering. What do you mean by blue economy? I am sorry, sir. I did mining engineering. Uh, Mining uh, engineering. yes, sir. Uh, Okay, not marine engineering. Okay, mining engineering. Anyway, do you know about blue economy? yeah, certainly, sir. Uh, blue economy involves the economic productions as well as economic activities around the oceans, which includes like fishing, which include the marine mining, which includes also the shipping sectors. Which is the challenges being faced by blue economy? Sir, first and foremost, the sustainable yield uh, uh, of fishing, specifically, sir. Secondly, sir, the marine pollution, which is because of the ships and logistics. Uh, Third, I believe, sir, the emerging challenge of the polymetallic nodules, uh, which the world is thinking of mining. So that can increase the threat to the ocean biodiversity and the oceanography in general, sir. Okay. Uh, Jharkhand, you have studied in, huh? Sir, You are a passed out from IIM Dhanbad, IIT Dhanbad. Huh? sir, So, as we know, the Jharkhand is the resource richest state of the country. In spite of that, it is poor. So, various factors responsible for its poverty. so sir, may I list them? Yeah, yeah. First of Sir, all, various sir, factors responsible for its poverty. It is sir, natural resource richest state of the country, as you know. 40% of mines and mineral resources are confined to the state of Jharkhand, isn't it? sir, Approximately. sir. In spite of that, it is poor. So, various factors responsible for its poverty. Sir, historical and political issue, I believe. Earlier, it was part of the Bihar as a whole, and historically, it was neglected. Secondly, sir, after the new formation of the after the formation of Jharkhand itself, the political instability was not so much present in Jharkhand, and it created the non-conducive environment for the investment to take place. Uh, Thirdly, sir, I believe the resource cost problem that Jharkhand faces aid cuts because majorly it depends on the finance commission transfers. So it did not try to develop its own capabilities. And fourthly, sir, I believe the tribes in the Jharkhand, they are multi-diverse with and the serenity and the environmental situation is such that it creates also a difficulty, a, a kind of dilemma between the environment and development, sir. So I believe these are the major factors, sir. So, when Jharkhand was created, initially there was political instability. But Raghuvar Das stayed for entire for 5 years as chief minister. But at that time, there was no political instability. Full term he enjoyed. Even then, it Sir, once a situation becomes worse, it takes time to create a conducive environment for the investors itself to make it believe that there will be some kind of certainty.
So overall, in the past few years, I have witnessed that the overall environment in the Jharkhand is improved. The invest summits also they have signed many MOUs also. So overall, the condition is improving compared to the earlier years. But But has Jharkhand there needs been to come any out of the. improvement? No doubt, MOUs have been signed by so many companies and all that, so, with so many investors, but they are not being materialized. Which are the reasons behind that? Even after signing the MOUs, not much progress has been made. Uh, Sorry, sir, I'm not aware about the exact Okay, reasons. which is the most important news today? Which you think that this is the most important news today? National news. The president of the Russia is visiting India for a 2 day visit, and I believe it is the That's most right. important. Which are the issues likely to be discussed in the meet? Sir, first and foremost, the defense strategic angle uh, that will like to be discussed. Second, sir, Ukraine and Russia conflict, in which Mhm. India could act as a middle role of the middle power. Uh, Okay. Thirdly, sir, I believe the oil issue, the oil trade, in which the Indians can hope for the get to get some kind of concessions. Sir. Okay. So, any other important news? This is the most important. You are right. Sir, Hmm. So, is it an and annual meet? Putin, with I mean, President of US, or we can say President. meeting between India and Russia. Sir, generally, it is an annual meet. Our Prime Minister also visited last year, so it could be termed as annual meet in the disguise of all the events which are happening. But it is, I believe, it is the one of the most important meet uh, in the recent past, sir. Okay. So now your interview is over. Now you tell me, how do you rate yourself? Good, very good, Mm, outstanding. thank you, sir. Sir, I believe out of 5 out of 10. नहीं, 5 से ज्यादा है। लेकिन और अच्छा करना है। आपका इंटरव्यू Sir, कब? sir, my interview is on 15th of December. 15th. Good. So it means approximately 10 days, we can say. Sir, sir. तो 10 days में अब क्या करना है? 10 days में you have to identify the probable questions from your DEF. I think you will Sir, get may I the note it video. down? हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन I think you will Thank you, get sir. the video. आप नोट करना चाहें तो करें. Sir, So thank you, sir. first and foremost thing, you have to identify the probable questions from your DEF, starting from your name only. Just, sir. Hobbies, everything, the subject which you have studied, the subject which you have opted. Economics से आपने opt किया है, economics से आपने MA किया है. और Sir. all of a sudden कैसे आप shift हुए economics में? That could also be a question because you were an IIT में marine engineering, marine नहीं, sorry, mining engineering My, आपने की, और उसके बाद में आप suddenly economics में. So reason for that, are the places which you have studied, the places which you belong to, your hobbies, and current affairs. जी sir. So you have to identify the probable questions and precise and concise answers. छोटा छोटा पॉइंट्स में आपको करना है. और आप ये विपासना मेडिटेशन, ये है आपका. So there are so Yes, sir. many types of meditation. विपासना मेडिटेशन है, हार्टफुल मेडिटेशन है, माइंडफुल मेडिटेशन है, मंत्रा मेडिटेशन है. हाउ डज इट डिफर विद विपासना मेडिटेशन? ठीक, Yes, sir. वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. एंड वेदर द एंड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मेडिटेशन आर द सेम, मीन्स माइट बी डिफरेंट, Yes. बट आर द एंड सेम. तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, विपासना मेडिटेशन. और आपने लिखा है पब्लिक, क्या है? पब्लिक स्पेस tiding. Tiding. Yes. What exactly you want to tell related with that?
Sir, majorly I take the initiative with respect to the public space cleanliness. Whenever I feel that people are not aware, So I try one to aware also, and cleanliness. I try to take it as a voluntary initiative. Good, good, good. So कहाँ का सक्सेस स्टोरी रिलेटेड विद ए पर्टिकुलर प्लेस वेयर यू हैव डन दैट, वो अपना पूछा जा सकता है। तो ये रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रिसाइज एंड कॉन्साइज ही थे, कहीं पे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं थे। स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग टेली कम्युनिकेशन। सर, जी सर। राजेंद्र सिंह वाटरमैन, तो ठीक, अच्छा आपने बताया। रिकॉग्निशन, मेगा से अवार्ड, स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जी सर। ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी में ओशन एसिडिफिकेशन मेन प्रॉब्लम, ऑयल स्पिल मेन प्रॉब्लम। जो आपने कहा वो ठीक है, लेकिन मेन है ये है। और तीसरा प्लास्टिक पॉल्यूशन। जी सर। और आपने सर्विस सारी ऑप्ट नहीं की, उसका तो रीजन है बिकॉज यू यू हैव ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड इन इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, सो यू हैव नॉट यस। ऑप्टेड फॉर ग्रुप बी सर्विस। यस और सर। ग्रुप ए में भी कुछ आप अगर कहें कि ग्रुप ए में कुछ सर्विसेज आपने लिखी हैं, इसमें से किसी में होगा तो ज्वाइन करेंगे। ग्रुप ए सारी आपने ऑप्ट की हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज आल्सो ग्रुप ए सर्विस। तो उसमें कहना सर आई हैव फिल्ड दीज सर्विसेज, रीजन बीइंग दैट आई जस्ट वांट टू सी माय नेम दैट विच सर्विस इज एलोकेटेड टू मी। तो अदरवाइज क्या होगा कि रिजल्ट निकल जाएगा, आपकी जो भी पोजीशन होगी होगी वो उसमें इंडिकेट हो जाएगी, लेकिन सर्विस एलोकेट नहीं। So I just wanted to see which service I am allocated to. I may not go to all Group A services. In some of them I can go, but not in all. Opt का रीजन ये आप बोल सकते हैं अगर चाहें तो ये हो गया। और important problems being faced by झारखंड that it is poor, सबसे पहले आप कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, नक्सल प्रॉब्लम, यस सर। सबसे पहली चीज ये। बाकी ठीक है, आपने गलत नहीं बोला, आपने ठीक बोला, लेकिन हमें तो इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी करनी है ना। फर्स्ट एंड जी सर, बिल्कुल। फॉरमोस्ट प्रॉब्लम इज दिस, ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स आर नक्सल अफेक्टेड। कितना डिस्ट्रिक्ट है? 24 है, ज्यादा है? सर, 24 डिस्ट्रिक्ट्स। 24 हैं, सारे के सारे नक्सल अफेक्टेड। तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली नक्सल प्रॉब्लम। बाकी आपने जो कहा वो ठीक था, ऐसा नहीं है कि वो गलत था, उसको बाद में आप इसके साथ सफिक्स कर सकते। पुतिन मीट वाला ठीक था आपका, और उस टाइम तक तो सब कुछ डिस्कस भी हो जाएगा। ट्रेड, ट्रेड से रिलेटेड पर्टिकुलरली, हालांकि आपने ऑयल के बारे में तो बोला, ट्रेड से रिलेटेड डिटेल में होगा, यूक्रेन से रिलेटेड भी होगा, बिल्कुल ठीक है। वो और $100 बिलियन जो टारगेट रखा है, उससे रिलेटेड जो लास्ट ईयर टारगेट रखा था। बिल्कुल यस। ठीक है, एकदम। यस सर। यस। यस सर। जब तक तो सारा क्लियर हो जाएगा, अभी तो हाँ हम हाँ और हाँ। आप ये तो प्रिलिमिनरी बात कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम तक ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और भी आजकल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिसेंटली सो मेनी dignitaries have visited India, and our यस सर। honorable prime minister has also visited some of the countries. जी सर। Prime minister and then external affairs minister, they have visited. What exactly has been discussed? ये current affairs से related। पार्लियामेंट में what is being discussed? SIR प्रॉब्लम, SIR टोटल इससे रिलेटेड जो भी चेंजेस लाने इलेक्शन से रिलेटेड, दोज आर टू बी डिस्कस्ड ऑन 9th। और वंदे मातरम 150 ईयर्स, 8th को पूरा डिस्कशन होगा इस पे। वंदे मातरम 150 ईयर्स कर रहे हैं। और कौन कौन से लेजिस्लेशंस इसमें काफी वो कराना चाहती है गवर्नमेंट, थ्रू कराना चाहती है, कौन कौन? चंडीगढ़ वाला जैसे सर इशू वो बोलना चाहिए, जैसे इफ दे कौन सा सॉरी कौन सा? आपको इंटरप्ट सॉरी करने के सॉरी लिए। सॉरी सॉरी। चंडीगढ़ वाला जो आर्टिकल 240 वाला जो इशू गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया था अभी, हाँ दैट हाँ। इज गोइंग इनटू बैक बर्नर। इफ दे आस्क वी शुड रेज दिस और। नहीं, अभी तो ये कि अब कौन कौन से इश्यूज यहाँ पे टेकअप होने हैं, वो तो शायद उन 10-15 में जो ये टेकअप करना चाहते हैं उसमें मेरे ख्याल से शायद नहीं।
ठीक और है सर। देख लेना कि जी सर। क्या उसमें है। तो 10-15 इश्यूज को उससे रिलेटेड ये बिल पास करवाना चाहते हैं। ठीक है। जी सर। तो ये हो गया। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रादर। ठीक है। और क्या हो सकते हैं, दो तीन तो हमने पूछे थे, और भी क्या हो सकते हैं। जी सर। और 101st यस सर। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से कर लेना है। और क्या था, आप बताएं, कोई कोई। सर टेनिस एज अ हॉबी लिखा हुआ है। हाँ, तो टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करिए और उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करिए। जी सर। मेडिटेशन आपने लिखा है, लेकिन मेडिटेशन काफी लोग लिखते हैं, उसमें से भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, कभी भी गलत आंसर नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। आज शायद आपने गलत आंसर तो कहीं नहीं दिया, बेटर आंसर हो सकता था, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। कहीं दिया गलत आंसर मुझे। नहीं सर, मुझे भी नहीं लगा, मुझे तो नहीं लगता है। शायद आपने गलत आंसर नहीं दिया। अब बेटर आंसर तो हो ही सकता है, वो तो एक अलग बात हो गई। और ये जो हम जीडीपी प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2030 तक, वो US$ 7.3 ट्रिलियन एक्सपेक्ट जी कर। सर। और 7.5 से तो वो नहीं होने वाला है, 8 से ऊपर तो होना ही चाहिए, इफ यू वांट टू अचीव दैट पर्टिकुलर टारगेट। अच्छा, जी सर। पब्लिक प्राइवेट पीपीपी, पीपीपी क्या होती है, ट्रिपल पी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वेयर गवर्नमेंट एंड नहीं, पब्लिक द। प्राइवेट पार्टनरशिप तो है, पैरिटी इससे रिलेटेड। ओके। यस यस यस। पीपीपी। पीपीपी जीडीपी ऑन द पीपी टर्म, हाँ, पीपीपी तो टर्म्स। पीपीपी में हम बेटर ऑफ हैं, अच्छी पोजीशन यस। है हमारी। यस, थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे हैं पीपीपी, यस। वैसे फोर्थ पे हैं। यस। जीडीपी को अगर आप लो तो फोर्थ पे हैं। यस सर। अब जीडीपी में हम थर्ड होना चाह रहे हैं बाय द ईयर 2028, और एट द मैक्स 2030। So यस। definitely with the growth rate of 7.5, we won't be able to achieve that. वो बड़ा बढ़ेगा, 8.5 या कुछ ऐसा होगा। आप और कैलकुलेट करके। मैं जी सर, जी सर। तो अब बाकी का भी क्या होता है, कितना बढ़ता है, तो उसके रेस्पेक्ट में भी हाँ, वो भी चीज़ है। फर्क पड़ता अभी है तो बिल्कुल। जस्ट अप्रोक्सीमेशन। यस। सर और एक चीज कोई। पूछना चाह रहा था मैं इससे रिलेटेड कि हम्म, लाइक वी आर प्रोजेक्टिंग अवरसेल्फ टू द वर्ल्ड दैट वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट, soon becoming third largest. बिल्कुल। We also say that we are going to be a new superpower. We are a Vishnu we are this, we are that. तो इन फॉरेन पॉलिसी जैसे सर आपका, लाइक चाइना डिड, चाइना ने बाइड इट्स टाइम, इट ग्रू, नाउ इट इज चैलेंजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर, बट मतलब वी आर प्रीमेच्योरली डूइंग इट आई अब फील। देखिए, हमारा क्या है कि हम डेफिनेटली प्रोग्रेस तो कर ही रहे हैं। हम हाँ। 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड थे कितने साल पहले, 10-11 साल द- पहले। अभी हम फोर्थ लार्जेस्ट हैं, और सून वी विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट। तो प्रोग्रेस तो कर रहे हैं। अब आप ये कहें कि हम तो चाइना को नहीं पकड़ पा रहे, चाइना इतना आगे भाग रहा है, यूएस से compete कर रहा है। अब यूएस और चाइना की तो बहुत इकोनॉमी में और जीडीपी में और हमारा इसमें बहुत अंतर है। तो ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है, इट विल टेक टाइम। और डेफिनेटली आप कहें कि हम तो यूएस से बहुत पीछे हैं, उसकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, ये देखो कि पहले क्या थी अब क्या है। तो प्रोग्रेस इज बीइंग मेड, और आगे भी प्रोग्रेस होगी। हमारा अच्छा चल रहा है इकोनॉमी के, अगर हम मामले में देखें या किसी भी और अदर एस्पेक्ट्स में भी देखें। अपना ये अभियान, इससे रिलेटेड ही देखिए, विकसित भारत। आत्मनिर्भर भारत से देखिए, डिफेंस से रिलेटेड देखिए, उसमें डिफेंस वाला हमने कितनी प्रोग्रेस कर ली, क्या क्या हमने बना लिया, कितने आइटम्स को हमने इंपोर्ट करने से बंद कर दिया, मतलब वो हमारे यहाँ पे ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन अब वो विश्वगुरु विश्वगुरु वो ठीक है, नहीं, भी मैं उस अपना एंगल से कहना चाह टारगेट है, रहा था। टारगेट तो होना ही चाहिए हाई, और उसको नहीं, अचीव करने के लिए। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मतलब वाई वी आर टेकिंग अ मेगा फोन और कह रहे हैं सब लोगों को, तो इट विल ऑल्सो बैकफायर अस ना, कि लाइक कंट्री लाइक यूएस, उन्होंने पता चला कि वी आर नाउ राइजिंग, वी आर ऑल्सो सेइंग इट, वी आर ऑल्सो चैलेंजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर, तो दे विल इम्पोज द सैंक्शन ऑन अस कि तुम राइज ही नहीं कर पाओगे
हम इतना कर देंगे। अब देखिए वो कर रहा है, लेकिन आपकी तो इकोनॉमी बढ़ रही है। उसने तो कितना सारा ये किया, अपना टैरिफ वैरिफ का आप देख रहे हैं। सर। तो इंडिया की आज की डेट में तो पोजीशन अच्छी है, कल को क्या होगी। और इसकी पॉलिसीज में वैसे कमी नहीं है, और कुछ भी सही उसका। ज्यादातर कंट्रीज, अब ठीक है नेबरिंग कंट्रीज थोड़ा ऐसे सर। वैसे हाँ उतना अच्छा नहीं रहा। अब वो सोच रहा है कि वो क्या मुनीर को ये करके और हाँ, अल्टीमेटली दे आर ट्राइंग टू इंटिमिडेट अस। हम्म, इंटिमिडेट अस। बिल्कुल। तो अब ये ये है हो रहा है। कि वो तो वैसे भी अगर आप नहीं भी कहेंगे तो देखेगा क्या प्रोग्रेस हो रही है। हर एक कोई कंट्री चाहता है मैं दूसरे से आगे निकल जाऊं, सही बात। और यूएस तो मच अहेड है हमसे। यस। जी सर। अब लेकिन वो है कि पॉलिसीज वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कोई हो सकता है। सर। यूएस वाला ये इससे कि अब पॉलिसीज में अब ऐसा नहीं है कि जो भी सारी पॉलिसीज यूएस अडॉप्ट कर रहा है वो सारी यूएस के फेवर में ही होंगी, यूएस का बेटरमेंट ही होगा। अभी तो जो भी डिसीजन लेना चाहिए हमारा कंट्री में क्या है आज की डेट में, जो भी फिस्कल मेजर्स हैं, जो भी है फिस्कल पॉलिसीज हैं, वो सही चल रही हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब डेफिनेटली जी सर। जितना उनका है ये जीडीपी, जितना उनका है पर कैपिटा इनकम, उतना हम कहाँ, बहुत पीछे हैं हम तो उससे। यस। लेकिन हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छी खासी प्रोग्रेस। तो ये ठीक है है। सर। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि कभी आपको किया जा सकता है, ये प्रवोक किया जा सकता है, प्रवोक नहीं होना है। कैंडिडली आंसर देना है, और अपना आंसर, अगर आप नहीं क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो इट इज बेटर टू से नो विद दैट कॉन्फिडेंस ओनली एज इफ इट इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दो तीन आंसर नहीं बताएंगे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एज यू नो योर नॉलेज हैज ऑलरेडी बीन टेस्टेड। अभी क्या टेस्ट किया जाना है? ट्रेट। इंटीग्रिटी। और सबसे पहले ऑनेस्टी इंटीग्रिटी आता है। सो मेनी ट्रेड्स आर टू बी सीन, उसमें सबसे पहले आएगा ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। उसके बाद में और चीज आएंगी, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। उसके बाद में और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कहीं आपका बीच में कोई एग्जांपल दे सकते हैं, कोई आपका एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसमें आपके ट्रेड्स देखे जाने हैं। क्वेश्चन में आंसर दो तीन का नहीं बता पाओगे, कोई इशू नहीं, गलत नहीं देना है बस। ये गलत में तो सबसे पहला जो क्वालिटी है वही चली गई, कौन सी? ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। ऑनेस्टी खत्म हो गई। सही सबसे बात। पहली चीज ही खत्म हो गई तो फिर क्या रह गया? कुछ नहीं रहा उसमें। और आप ये सोच के करना कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसका आंसर जानता होगा। देयर में भी पॉसिबिलिटी 1% 2% पॉसिबिलिटी दैट ही और शी माइट नॉट बी नोइंग। तो बाकी भी तो चार बैठे हुए हैं। जी सर। तो गलत आंसर तो देना ही नहीं है। ठीक है। तो जी आपकी सर। इंटेलिजेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही उसमें कंटिन्यू रहना चाहिए। सर। ठीक है। तो जी ये, सर। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सर एक क्वेश्चन था, ये जो मैंने टाई पहनी हुई है मरून है, मतलब विल इट वर्क? मैं ब्लू सूट पहनूंगा, अभी ये थोड़ा ब्लैकिश है, वहां पे ब्लू हाँ पहनूंगा। ऐसा प्लेन टाई तो मुझे तो ठीक लग रही है। मरून है सर, ब्रांड नहीं है, बिल्कुल मरून रखी है हाँ मैंने नहीं, इसलिए। मैरून मैरून हाँ। कलर है। और इसकी हाँ। जो नीचे तक की जो टाई जा रही है वो जस्ट बेल्ट को टच कर। ऊपर टच करे जस्ट। बहुत नीचे बांध लेते हैं, कुछ वैसा नहीं होना सर। चाहिए, बहुत ऊंची भी नहीं होनी चाहिए। और कॉलर भी करीब करीब ठीक टाई बंधी हुई है, थोड़ा सा लूज लग रहा है क्या? पता नहीं। हाँ सर, ये शर्ट लूज है, आई विल चेंज द शर्ट। हाँ शर्ट जो है थोड़ा सा प्रॉपर। यस। ऊपर से वो ये पट्टी का यहाँ से थोड़ा लूज है, सा है। लूज है, हाँ ऊपर से लेकिन वो लूज है। ऐसा नहीं हो जाए, ज्यादा टाइट भी नहीं रखनी है क्योंकि बोलने में हाँ दिक्कत हाँ। हो, और वो नहीं होना सर। चाहिए। सर। मुझे तो ठीक लग रहा है, कोई जी। दिक्कत नहीं है इसमें। बॉडी ठीक लैंग्वेज है। में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई टू आई कांटेक्ट में भी नहीं प्रॉब्लम लग रही है। तो बाकी तो सब ठीक है। ठीक। तो यू विल डू वेल, और अच्छे से करिए, सर। आपके पास टाइम है। और उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं भूलना है। आज का तो आपने पढ़ा है शायद, पढ़ा है ना? सर अभी नहीं पढ़ा है, बट आई गॉट टू नो कि रशियन प्रेसिडेंट इज कमिंग एंड इट इज द बिगेस्ट न्यूज, ये मैंने पढ़ा था, तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड, बट आई मिस दैट। उस दिन नहीं भूलना है, और रात जी को सर। रिलैक्स करना है। 15 को सर। आपने बताया ना, 14 की रात को कुछ नहीं पढ़ना है, दिन में पढ़िए खूब।
पूरा दिन जी पढ़िए, सर। कोई इशू नहीं है। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे जो भी पढ़ना चाहे पढ़ें। रात को नहीं पढ़ना है, लेकिन अगले दिन न्यूज़पेपर जो, वो जी बहुत सर। इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो, न्यूज़पेपर से रिलेटेड। सर। और ये पुतिन वाला तो अच्छे से करना है, जी सर बिल्कुल। इम्पोर्टेंट। तो यही है। सर। और ऐसा लगना चाहिए दैट यू हैव एंजॉयड योर कन्वर्सेशन विद द बॉट। ठीक है ना, टेंशन में नहीं रहना है, अपना सर। आराम से आंसर देना है, काम कूल कंपोज, वो सब रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सर। ऑल द थैंक यू। बेस्ट। थैंक यू सर।